Hey, hi everyone. Welcome to the live stream session again. So, this is the ninth day of our live session series, and consistently around 9 p.m. we are coming on this YouTube platform, which is Explorer Physio. And इस channel का purpose basically is to disseminate information about physiotherapy, science, और एक तरह से एक conversation start करना जहाँ पे we as a physio or general people also who are interested in science and understanding about their body and how it functions well, and when you go through with the injury or any pain, what happens actually. So kind of people who are interested in exploring and those who want to learn, I think this is the platform which will serve best those kind of people. And दिस इज डे 9th. हमने इसे एक एज अ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कि विल कम अप एंड विल टॉक अबाउट थिंग्स, different things, especially about physiotherapy and more of science. And it's going good. This is day 9 and we are back again with another session. आज हम थोड़ा डिफरेंट क्लिनिकल बेस पे हम थोड़ा बात करने वाले हैं. सो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, जो भी अभी क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो से आई होप कुछ लेकर जाएं एंड it will add some value in your life in terms of clinically practicing. So आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के बारे में. पहली बात है कि गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों हमें कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्यों हमें पहले से चीजें जो सेट हो रखी है उनके अराउंड चलना है. बहुत से लोग को का ये रहता है कि हमारी प्रैक्टिस है तो हम हमारी टेक्निक बनाएंगे, हम अपना कुछ खुद का क्रिएट करेंगे, ठीक है. बट क्वेश्चन इज व्हाई टू रीइन्वेंट व्हील अगेन एंड अगेन. अगर एक बार व्हील बन चुका है तो आप उस व्हील का यूज करके ट्राई टू गो एज फार एज यू कैन. आप अगर वो आपको लगता है कि व्हील आपके टेरेन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जो पहिए हैं जो बने हुए हैं, पहले मैं एज एनालॉजी बता रहा हूँ कि अगर वो पहिए आपके टेरेन के अकॉर्डिंग नहीं है, टेरेन मतलब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो आप जिस तरह का पेशेंट देख रहे हो, तो आप उसके अंदर एड ऑन्स, आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो. बट अगर वो पहिए काम करते हैं और हर जगह काम कर रहे हैं और उसमें आपको अगर फॉलो करने पे आपको फायदा हो रहा है, तो देन व्हाई नॉट टू यूज दोस थिंग्स. सो आई विल शो यू some clinical practice guidelines जो after effort of so many people, मतलब एक तरह से इसको मानिए कि आप अगर किसी को जानना है कि क्या बेस्ट तरीका है कोई चीज को करने का, कोई चीज का मतलब मेरा यहाँ पे आई मीन अबाउट डिलीवरिंग केयर. जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप जब उसको ट्रीट करते हो तो आप कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपके लिए ये सही है या फिर कोई और चीज आपको डिलीवर करनी है. क्या आपको नीडलिंग करना है या आपको कपिंग करना है, दोनों ही नहीं करना है वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट क्या जरूरी है, क्या एक्सरसाइज उसके लिए जरूरी है, क्या रेफरल जरूरी है, क्या मशीन्स उसको फायदा करने वाली है, या फिर उनको कुछ नहीं करना है तो भी वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है. तो ये सब चीजों का जो आंसर है, ये इन चीजों का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते होंगे. आई होप कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस आपको कहीं ना कहीं मदद करें एक अपने थॉट प्रोसेस को एक खांचे में डालने से के लिए, जहां से आप अपना एक जर्नी स्टार्ट कर सको रैशनल थिंकिंग का एंड डिसीजन मेकिंग का या क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का, जहां पे आप इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पर्सन जो भी आपके पास आ रहे हैं केयर के लिए, उनके लिए आप अच्छे से चीजें कर पाओ और आप जो अल्टीमेट आउटकम है बेस्ट आउट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का या फिर क्लिनिकल केयर का, वो आप फुलफिल कर पाओ. तो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द process and we'll move through the clinical practice guidelines. Especially हम common we'll go to the page and we'll see what are things are there, and वहां से we'll pick something and we'll start reading or start discussing around that point. Okay, so let's go to the let me share my screen और हम फिर one by one चीजों को discuss करते हैं. So this is the website which is there by APTA, ठीक है. अगर आप देख पा रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन को, तो यू विल सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये एप्टा का एक वेबसाइट है. अगर आप सर्च करेंगे, लेट मी गो बैक 2 बार, लेट मी सी फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड. ओके,
सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ ये orthopt.org याद रखना है। ortho.pt.org जब टाइप करेंगे आप, अगर आप सिर्फ सीपीजीज भी टाइप करते हैं, अगर आप गूगल पे जाते हैं और इफ यू आर टाइपिंग JAWSPT और अबाउट CPG JAWSPT, ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे, allow this time, why it is using my mouse, ठीक है, आपने जैसे CPG JAWSPT टाइप किया एंड इसके बाद ये यहाँ पे आपको, आप JAWSPT इज अ वेरी रिनाउंड जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स एंड फिजिकल थेरेपी, बट आप चाहिए यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस अगर आपको एक जगह एक्सेस करना है तो गो फॉर दिस अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी। एंड ये एप्टा का खुद का एक वेबसाइट है, एप्टा ऑर्थोपेडिक का, एंड यहाँ पे आपको ये पब्लिश CPG करके यू कैन सी a tab and you will see that every single CPG which has published till now, you will find everything here, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं and you will find multiple things here like starting from sorry, so yeah, let me go back to the thing. ओके, सो आप पब्लिश सीपीजी पे जाएंगे, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक्लिस पेन स्टिफनेस एंड मसल पावर डेफिसिट मिड पोर्शन एक्लिस टेंडनोपैथी रिवीजन टू डाउन 2024, ये रीसेंट वन है सबसे ज्यादा। डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन, हिप पेन एंड मूवमेंट डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद नॉन आर्थराइटिक हिप जॉइंट पेन, exercise based and anterior ACL ligament injury prevention. So there are multiple things. Intervention for the management of acute and chronic back pain. It's a revision 2021. Clinical guidance to optimize work participation after injury or illness, the role of physical therapist. I think it has very detailed, varied topics also. Patellofemoral pain, neck pain, there is knee stability and movement coordination impairment, ligament sprain, shoulder pain, mobility deficit, adhesive capsulitis के बारे में। तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर एंड हम जो स्टार्ट कर सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्लिस पेन के साथ। एक्लिस पेन स्टिफनेस, पावर डेफिसिट मिड पोर्शन एक्लिस टेंडनोपैथी के बारे में। we'll download this and we'll read it, or we'll see how we can discuss it one by one. So this looks like an detailed document, ठीक है। So Ruth L. Chimenti, Christopher Neville, Jeff Hawke, Tyler Cuddiford, Dominic Carrera, Robert L. Martin, ये इन authors ने मिलके, they all are, I hope they are all researchers and they all are doing well, and you will see people making effort to make things better in long term, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो अपने researches के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू they are trying to bring things in front of the world, and yep, so this is the CPG. आप जैसे ही फर्स्ट पेज खोलेंगे, आपको अगर आगे नहीं पढ़ना है, आपको अगर पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत मौत आती है, तो these are things I think you can use. This is summary of recommendation. Summary of recommendations में there are different grades, पहले पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे इंटरवेंशन एक्सरसाइज के अंदर क्या यूज करना है, ठीक है। इंटरवेंशन जो पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग में क्या यूज करना है। इंटरवेंशन का मतलब होता है आप जो दे रहे हो, आप जो इंटरवीन कर रहे हो एक पेशेंट की जर्नी के अंदर, उसके रिहैब प्रोसेस के अंदर, तो इन सब चीजों के अंदर आपको क्या, किन चीजों का जो आउटकम है वो बेस्ट है, किन चीजों के ऊपर अभी भी इतना डिटेल के अंदर ओपिनियन नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो मैनुअल थेरेपी में क्या करना है, ड्राई नीडलिंग करना है, नहीं करना है, हील लिफ्ट्स, ऑर्थोसिस, टेपिंग, फिजिकल एजेंट्स, लो लेवल लेजर थेरेपी, एवरीथिंग इज समराइज इन वन पेज। अगर आप एक पेज पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या एक्लिस पेन, स्टिफनेस या मसल पावर डेफिसिट जैसे जिस जो मिड पोर्शन एक्लिस टेंडनोपैथी में होता है, हमको क्या फॉलो करना है, हम किसके अराउंड अपना ट्रीटमेंट डिजाइन कर सकते हैं। अब इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन डिफर फ्रॉम individual to individual, but what is actually needed in most of the cases, that's what we need to understand, and this is what this guideline tends to offer. तो 32 पेज का पीडीएफ है। अगर ये 32 पेज की पीडीएफ में अगर आप फर्स्ट पेज से भी स्टार्ट करते हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट एन क्लियर व्यू दैट व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस केस। अगर आप नीचे डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज है जो आई थिंक हमको समझना जरूरी है, अबाउट द लेवल ऑफ एविडेंस। सो अगर आप ये देखेंगे, देयर आर 5 लेवल ऑफ एविडेंस, ठीक है। लेवल 1 एविडेंस
सबसे क्रीम लेयर, जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलता है, दैट इज एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज, सिस्टमैटिक रिव्यूज और आरसीटीज। आप इसको फिल्टर की तरह समझिए कि कितना ज्यादा अच्छे से कोई एविडेंस को फिल्टर किया जा सकता है आउट ऑफ जितने बायसेस होते हैं, जितने भी स्टडीज के अंदर लूप होल्स होते हैं, उन सबको हटाकर जो हमको एविडेंस एक ऑब्टेन होता है, दैट इज लेवल 1 एविडेंस। अब उसके अंदर भी वी नीड टू सी इंडिविजुअली कि व्हाट आर द लूप होल्स एंड व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन, बट level 1 evidence you can trust it with eyes, not eyes closed, I will say. You need to be with an open, with a rational mind, but level 1 evidence is the highest quality of evidence available always. Level 2 evidence is obtained from lesser quality diagnostic studies, systematic reviews, prospective studies or RCTs, like weaker diagnostic criteria and reference standards, randomization improper हो, blinding ना हो, less than 80% follow up हो। तो ये जो level 2 studies, I think level 1 is then कंसिडर्ड टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेवल 2 के अंदर अगर जो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज भी है, या फिर जो आरसीटीज या सिस्टमेटिक रिव्यूज है जिनके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, उनको हम लेवल 2 में रख सकते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन मूव फॉरवर्ड। लेवल 3 इज अबाउट केस कंट्रोल स्टडीज और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, जहाँ पे इट इज नॉट काइंड ऑफ इंटरवेंशन, इज नॉट इन्वॉल्व, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, lesser quality of study. It is kind of more of retrospective in nature. Observation is there. Number of people or number of sample size is very less, so not reliable again. Fourth is case series and fifth is expert opinion. तो ये 5 लेवल ऑफ एविडेंस होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से जो आपका एविडेंस है उसको कैटेगराइज कर सकते हो, एंड यू कैन सी दैट व्हाट आर द रिसर्चेस आर गेटिंग यूज्ड टू फॉर्म एन सीपीजी। एक और जो चीज है आपको जो याद रखना है, दैट इज ग्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशन, या फिर किस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस कितना है और ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन क्या है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आपने ऊपर ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ पे ग्रेड्स दे रखिए, ए, ई, बी, बी, एफ, एवरी इंटरवेंशन हैज गिवन एन अ ग्रेड। अब ग्रेड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि व्हाट ए सजेस्ट। So A suggests that it has strong evidence in support of it, the intervention, और इसको highly recommended है। आप ABCD को इस तरह समझिए कि A is the highly recommended, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे it becomes weaker। आप कर भी सकते हो, you should not, F is you should not, A is level of obligation must or should, आपको वो करना ही करना है, you cannot shy away from that, ठीक है, you should not skip that, you not, मतलब आपको वो मिस नहीं करना है। सो ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन अगर ए है, दैट मींस देयर इज स्ट्रांग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन विद एक्यूलेस टेंडनोपैथी, और जो भी कंडीशन है, अगर वो ग्रेड है ए, तो आपको वो अपने ट्रीटमेंट प्लान में रिकमेंड करना है। स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस, एक प्रीपोंडरेंस ऑफ लेवल 1 और लेवल 2 स्टडीज सपोर्ट द रिकमेंडेशन, दिस मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेवल स्टडी। अब जब ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन ए होता है, तो इट मींस कि लेवल 1 और लेवल 2 स्टडीज इंक्लूड किए गए, मतलब सिस्टमैटिक रिव्यूज और आरसीटीज को इंक्लूड किया गया है, और उसके एविडेंस के बेस के ऊपर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज करनी है। दिस शोज गुड रिजल्ट्स। ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन अगर बी है, तो इट मींस मॉडरेट एविडेंस, मींस सिंगल हाई क्वालिटी और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑफ प्रिपरेटर्स और लेवल 2 स्टडीज सपोर्ट द रिकमेंडेशन। ज्यादा हाई क्वालिटी स्टडीज नहीं है, बट लेवल 2 स्टडीज हैं, so you should do, मतलब there is a moderate evidence कि आप इसको follow कर सकते हो। Level C studies means grade of recommendation C means weak evidence, मतलब कि एक level 2 study है और ज्यादातर जो studies है वो level 3 और level 4 studies है, including statement of consensus by content experts support a recommendation. Obligation to follow, you may use it, you may not use it depending upon the case. D, conflicting evidence. Higher quality studies conducted on topic disagree with respect to their conclusion. The recommendation is based on conflicting studies. D का मतलब होता है ना ही इस तरफ हैं लोग, ना ही आज दूसरे साइड है, मतलब ना ही हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि यूज करना है, या ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं करना है, ठीक है, बट we don't know, we really don't know what needs to be done in this case. तो लेवल डी रिकमेंडेशन, आप जो लेवल एविडेंस है वहां पे अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, और उसके अराउंड आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट सेज। नाउ ई इज थियोरेटिकल और फाउंडेशनल एविडेंस। इट मींस
कि preponderance for evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models, principles, or from basic sciences bench research support this conclusion. Again, it's a may. You may need it sometimes. In some cases, you may not need in other cases. Grade of recommendation अगर F है, so that is expert opinion. That means ये best practice based on clinical experience of guideline development team. जो भी टीम इस गाइडलाइन की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, उनका जो एक अपना एक प्रैक्टिस बेस्ड एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेस के ऊपर ग्रेड एफ इज रिकमेंडेड एज एन लेवल ऑफ एविडेंस, एंड यू अगेन मे यूज इट. सो आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर. अगर ए बी सी डी ई एफ देखें, ए इज बेस्ट रिकमेंडेड, you must to. B should, C to F is may. You may use it depending upon the cases or depending upon the level of requirement. Like कितना उसको use करना, कितना नहीं करना, उसके बेस पे आप उसको कर सकते हो. Great. So I hope we have covered most of the part. किस तरह से हम चीजों को आगे हमको देखना है, and we will start with summary of recommendation से. Clinical mid Achilles tendinopathy. जो Achilles tendon होता है, tendinopathy is a condition which is more of related to pathology of tendon. Tendons are very macrosensitive in nature. जो tendinocytes होते हैं, they are very load sensitive. If you do not load it, they swell up. Like they lose their ability to absorb forces. If you overload them, then again it's problem. They get more like in kind of, there are three grades of tendinopathy again. Reactive, like there is a reactive tendinopathy which is kind of an initial, then there is an degenerative tendinopathy जहाँ पे it goes in a like part of degeneration, and then it goes back to the normal if you load it in a good way. So it has multiple type, insertional, mid portional tendinopathy. So यहाँ पे mid portion tendinopathy के बारे में बात करेंगे basically. Summary of recommendation की अगर हम बात करें, तो interventions के अंदर exercise, there is a grade A evidence that clinicians should use tendon loading exercise with loads as high as tolerated as a first time treatment to improve function and decrease pain for individual with mid portion Achilles tendinopathy who do not have presumed frailty of the tendon structure. ठीक है, it is highly recommended कि आप use करें more of, let me use a marker. So just give me a second. Okay, so clinician should use tendon loading exercises. Tendon loading exercise का मतलब आपको ऐसी एक्सरसाइज यूज करनी है जहां पे टेंडन लोड हो रहे हो in terms of exercise itself. Simple calf raises, it's not a tendon loading exercise as such. आपको धीरे धीरे like eccentric loading हो गया, या फिर you need to start with some heavy loading. Heavy isometrics are also recommended. Heavy flow resistant HSR exercises are also recommended in these kind of treatment, but it should be used for people who are in pain also, and pain is not a factor जहाँ पे हमको ज़्यादा consider करना है. You should go through with the tendon loading exercises in grade A, and that is a grade A recommendation for people in Achilles tendinopathy pain. Grade A evidence is about using tendon loading exercises for managing for the Achilles tendinopathy. Should exercise at least 3 times a week at an intensity as high as tolerated. Again, grade A evidence is more about the people जो I'll say it is kind of expert opinion, nothing as such कि 3 time ही करना है. Intervention, patient education and counseling. Clinician, there's a grade B evidence, means level 2 qualities of studies and level 1 quality of low quality studies are included. Clinicians should provide education and counseling on Achilles tendinopathy with either a pain signs or pathognomonic factors in combination with the tendon loading exercises for Achilles tendinopathy. Education and counseling can be provided either in person or via telehealth according to the individual preference. So counseling is important. Like you need to give them understanding that it takes long time. Pain is very dynamic in nature, and you need to understand that loading is important for tendinopathy to improve the outcomes. Grade B evidence है, clinician should advise that complete rest is not indicated with individual with mid portion Achilles tendinopathy, and that they should continue with their activities within their pain tolerance. Activity continuation is very important to
not go in a state जहाँ पे you are avoiding most of the things and you are not loading your ankle itself, ठीक है? अगर हम interventions की बात करें, manual therapy may use, there's a grade F evidence again, this is grade F means आप expert opinion की बात कर रहे हैं. Clinician may use manual therapy directed manipulating or mobilizing muscle, joint, connective tissue, or those with mid-portion tendinopathy and mobility deficit. Again, not really highly shown in evidence as a grade A or grade B. Grade F, dry needling may use intramuscular riding to treat calf-related muscle pain and stiffness, particularly those with more acute symptoms or in those who do not tolerate a progressive loading program. So again, there are multiple contextual factors involved in manual therapy and dry needling. So keeping those things in mind, I think you may go for it. Intervention, heel lifts, grade C evidence says that you may use heel lift as a therapeutic tool to temporarily reduce ankle dorsiflexion during activity for individuals with mid-portion Achilles tendinopathy. You may get some symptomatic relief if you use a heel lift, but along with other treatment part, I think this works really well. Intervention के अंदर orthosis, grade D evidence again. There's still contradictory evidence अभी के लिए, तो we cannot really recommend about the orthosis for now कि ये use करना है नहीं करना है. Taping again, there are multiple contextual effects and contextual effects वो होते हैं जो actual treatment के effect के अलावा चीजें बन रही हैं, जैसे कि therapeutic setting हो गया, therapeutic belief हो गया, आपके जो beliefs हैं, clinician के साथ आपका जो एक bond है. There are multiple things which really work. What clinician is explaining it to you, all these things really matter when we talk about contextual factors. Clinician may use rigid tapping to decrease strain on the Achilles tendon or foot posture in individual with more portion Achilles tendon. Again, grade E evidence, not really something we should do. Intervention with physical agents, low-level laser therapy. Clinicians should not use low-level therapy for individuals with mid-portion Achilles tendinopathy. Now, there is a clear say that you should not use lower level laser therapy because it doesn't outweigh the other important recommendations which are there. Physical and therapeutic ultrasound, they should not use a therapeutic ultrasound alone to treat Achilles tendinopathy. Now there's the term alone. Most of the people, what they do, they use electrotherapy as an individual treatment. आप अल्ट्रासाउंड करते रहते हो around knee, ankle and उसके around, and you will not get any outcome out of it because you are not loading, you're not taking concern of the physical function of the person. आप उसकी लाइफ में ये नहीं देख रहे हो कि वो 24 घंटे में से कितना घंटे एक्टिविटीज कर रहे हैं उस तरह की जहाँ पे जो उसके लिए नॉर्मल है, बट ही इज अवॉइडिंग बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट. ठीक है, सो if you want him to get better, you need to start with the activities again so that you can make him do all those things in a tolerating the pain also in a good manner. ठीक है, intervention, multimodal intervention लास्ट जो भी आप इसके अलावा जो यूज कर सकते हो. क्लिनिशियन में इंक्लूड multimodal treatment including a variety of intervention to enhance the benefit of exercise for those with mid-portion tendinopathy. मल्टीमोडल इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग चीजों को कंबाइन करके यू आर मेकिंग ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम. ओके, यू आर यूजिंग हाइड्रोथेरेपी आल्सो, you are using exercise therapy, you are using some manual therapy techniques. They can include variety of interventions to combine things and to improve the benefit of exercise therapy, but we have only one grade A recommendation, that is tendon loading exercise. If you do tendon loading exercise really good, as high as tolerated, you will see that the function is improving and आपका जो pain है because of Achilles tendinopathy, it is getting reduced. So yep, that's all about the summary of recommendation. अब अगर आप नीचे देखोगे इसके अंदर यही जो हमने चीजें बात की है उनके बारे में डिटेल के अंदर चीजों को बताया गया है, like what is the clinical course. पहले तो बात तो होता क्या है, like what is Achilles tendinopathy, how you can diagnose it. ठीक है, एविडेंस अपडेट क्या है, हाउ यू रियली डायग्नोज थिंग्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको कैसे ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, आउटकम मेजर्स कौन से यूज करना है, एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हमको देखने को मिलता है. ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. फिर इंटरवेंशन पे हम जब बात हैं तो एक्सरसाइज रिकमेंडेशन क्या है. एक्सरसाइज रिकमेंडेशन के अंदर भी ग्रेड एविडेंस के अंदर क्या यूज किया गया है, हैवी लोड, स्लो स्पीड,
exercise program is recommended to decrease pain and improve function for patients. So you will see there are detailed like डिस्क्रिप्शन कि व्हाट स्टडीज वर यूज्ड, कौन सी ग्रेड 2 स्टडी थी, कौन सी ग्रेड 1 स्टडीज थी, किस तरह से चीजों को रखा गया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस, ठीक है। स्ट्रेचिंग करना है नहीं करना है, न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है, सो यू विल सी एवरीथिंग व्हाट वी डिस्कस अर्लियर, दिस इज काइंड ऑफ पुट हियर। नाउ दिस इज आल्सो ए रियली गुड थिंग, डिसीजन ट्री, मेडिकल स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यू नीड टू go for an examination and then you need to see the irritability stage. I think हम कल discuss कर सकते हैं. I am also seeing this for the first time because I didn't read it completely. I was just focusing on the grade of recommendation, but this is I think a good thing जहाँ पे आप देख सकते हैं कि it does we are really sorry. Like there was some issue with the network, तो वो network lose हो गया. But I was talking about something great जो हमको अभी discover हुआ, and it is the clinical pathway. आप देखेंगे the decision tree is very important कि आप किस तरह से decision लेंगे when something comes up which is difficult to classify. आपको कहाँ क्या करना है, किस तरह चीजें करना है, low tolerance में क्या करना है, high tolerance में क्या करना है, irritability हो तो क्या करना है. I think this is really great, and we will discuss things in detail for tomorrow's session. Okay, so we'll continue with these kind of things for sure in coming days. I know it's a kind of long session to be, but trust me, this helps. जब आप कुछ सीखना चाहते हो, this helps when you want to update yourself with the clinical reasoning and clinical understanding. So I will try to keep things more short and to make use of your time in the best way possible. But CPGs हमने डिस्कस किया आज, हमने एक्लिस टेंडनोपैथी के बारे में डिस्कस किया, मिड पोर्शन एक्लिस टेंडनोपैथी के बारे में कि व्हाट आर द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ट्रीज आर द, आप क्या ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन रिकमेंड करता है. एक चीज याद रखिए, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एविडेंस, there are different grades of recommendation. Level 1 evidence you need to figure out, you need to go for it. Grades के अंदर grade A, grade B, grade C, everything is important, but grade is recommendation, sort out for it, and I think you will get most of the value out of your clinical practice. ठीक है, we'll stop our session now, and हम कल वापस will connect. Tomorrow will be the day 10 of our 30 days live session series, and I hope it's going good, and I'm learning a lot. I will be creating more of reels for you people so that we can grow and we can learn more from the information and as a community all together. So take care, have a great day, and see you. We'll meet tomorrow. Bye bye.